हेलो एवरीवन, दिस इज नैन्सी एंड वेलकम टू माय चैनल नैन्सी सिंह। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लीनियरली डिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स। लेट एस इक्वल टू अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 सो ऑन अल्फ़ा n बी a set of vectors, then S is said to be LD। LD मीन्स लीनियरली डिपेंडेंट, इसको हम शॉर्ट में LD लिखेंगे। इफ़ देयर एग्जिस्ट का सिंबल होता है स्केलर्स a1 a2 so on an not all 0 such that a1 alpha 1 plus a2 alpha 2 plus so on plus an alpha n equal to secant theta। हम अदर वर्ड्स को देखते हैं। In other words, S is LD if at least one scalars is non-zero. The homogeneous system a1 alpha 1 plus a2 alpha 2 plus so on an alpha n इक्वल टू सिगलेटन थीटा। अब हम पढ़ेंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स। अब हम पढ़ेंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स। इंडिपेंडेंट set of vectors। Let S equal to alpha 1 alpha 2 so on alpha n be a set of vectors, then S is said to be Li. Li means linearly independent if a1 alpha 1 plus a2 alpha 2 plus so on plus an alpha n equal to secant theta, imply that a1 equal to 0, a2 equal to 0 plus so on an equal to 0. In other words, S is Li if all the scalars are 0 in
the homogeneous system A1 alpha 1 plus A2 alpha 2 plus so on plus an alpha n equal to singleton theta.